नमस्कार दोस्तों। तो ये एक प्रश्न है जो गेट में पूछा गया है 2025 में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर x 0 to पाई ओपन इंटरवल में है और un x sin n x बाई अंडर रूट n इज़ डिफाइंड एंड n फ्रॉम 1 to 3, तो इस सीरीज का कन्वर्जेंस का क्या ऑप्शंस ठीक होंगे, दैट ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये आस्किंग है सिग्मा यू एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, यू एन डैश कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, और यू एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉम्पैक्ट सबसेट। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व इट। तो आई विल शो यू फर्स्ट हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले इसका पार्शियल सम निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ा लिखता हूँ इधर, तो अभी देखते हैं इसको। तो ये है साइन एन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एन, राइट। तो अंडर रूट एन को अभी फॉर द टाइमिंग हम अभी साइड में रखते हैं एंड वी कैन एज्यूम लाइक it is a product of two things. Basically we are looking at the sum as this series, whether it is what is the convergence of this. So I can write this as something like an bn, all right, an bn, and of course n is from 1 to okay, I mean you can write capital N, doesn't matter, but you can anything you can write. This is a script only. And here I define an as sin nx and bn as 1 over under root n. तो डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम समहाउ ये दिखा दें कि सिग्मा an अगर बाउंडेड है, राइट, सिग्मा an इफ इट्स बाउंडेड इसका मतलब n फ्रॉम 1 to n, किसी भी n के लिए, कैपिटल N के लिए ये सम बाउंडेड होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव टू शो। अगर हमने वो दिखा दिया तो डिरिचलेट टेस्ट ये बताता है कि कोई भी सीरीज जो कि bn है, पॉजिटिव है, जीरो की ओर जा रही है, डाउन टू जीरो, इट इज़ कमिंग डाउन टू जीरो एज एन अप्रॉच टू इन्फिनिटी, तो ये प्रोडक्ट जो है ए एन बी एन, दिस विल कन्वर्ज। ये डिरिचलेट टेस्ट है। दिस इज व्हाट वी आर इंटेंडिंग टू अप्लाई। ओके, नाउ लेट अस सी वेदर इसका सम क्या होता है साइन सीरीज का, वो थोड़ा देखते हैं अभी। तो ठीक है, अभी हम व्हाट वी वांट टू इवैल्यूएट सिग्मा साइन एन एक्स। तो ये इसका यूजिंग यू कैन जस्ट डू दिस, आई मीन इसको आइलर रिप्रेजेंटेशन में खोल दीजिए इसको, e टू द पावर आई एन एक्स, राइट। वो क्या हो गया, कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स। और ओके चलो n हम यहाँ से 1 से n तक लेते हैं, n इज़ फ्रॉम 1 to n, सेम देन यू हैव टू टेक हियर n इज़ फ्रॉम 1 to n। तो अगर ये सब, अब इसको क्या, इट इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज, सिंपल योर ज्योमेट्रिक सीरीज विद r इक्वल टू इट पावर आई एक्स, दैट्स हाउ इट इज गोइंग। सो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट, आई मीन टेक द इमेजिनरी पार्ट आउट ऑफ दिस वन एंड दिस, इफ यू वर्क आउट इट विल टर्न आउट टू बी साइन कैपिटल N x by 2 into sin n plus 1 by 2, okay, into x. This is what you will get, and whole thing divided by sin of x by 2. ये आप देख लीजिए, तो छोटा सा है इसको, बट नहीं भी है तो इसको याद रख लीजिए। दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइन एन एक्स बाई 2 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2। तो ये हमारा सीरीज है। नेचुरली दिस, इफ आई लुक एट
sigma, I can just take mod of this one, sigma sin nx. Okay, then this whole thing, of course these two terms are less than 1, therefore this whole is less than 1 over sin x by 2. And of course for any x, this is a finite quantity, and this is a finite quantity sin x by 2 if x is non-zero obviously, but x is 0 it is getting blowing up infinity, तो नहीं होगा, otherwise it is a finite quantity. So this series B, it is showing it's a bounded for each x, right? For each x it is bounded. So for each x in 0 and open pi, this thing is bounded because sin x by 2 is a finite number, and hence it converges, and hence this a and bn, which is nothing but sigma sin nx divided by under root n, is just a product of 2, this will converge. Why it will converge? Because Dirichlet test is saying so that it is converge, and that simple test है. तो अब इसके आगे अब हमको ये एक तो हमारा पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया कि ये सीरीज जो है 0 to पाई में पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, दैट इज़ श्योर. तो वो ऑप्शन एक है उसमें, दैट इज़ करेक्ट. नाउ सेकेंड वी कैन थिंक अबाउट क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है. तो इसका आंसर है यूनिफॉर्मली तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी इन द 0 to पाई. रीज़न, क्योंकि ये कभी भी यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं होगा, right? Because to get it uniformly bound, there is no m basically, there exists, we are checking does it uniformly converge, does it uniformly converge, and answer is no. Okay, why it is no? Because there exists no m in R such that maybe R plus such that 1 over sin delta by 2, sin 1 over sin x by 2 1 over sin x by 2 can be bounded with that m. Okay, तो there exists no m, ऐसा कोई m नहीं है कि ये बाउंड हो सके when x is in 0 to pi. I mean the idea is x, when it is x near to 0 or near to pi, that time it will be a shooting up because the values will be very very small and it cannot be remain bounded, and that is the reason it cannot uniformly converge. Now there is an option which says does it converge on a compact set. Okay, compact subset of 0 to pi. Now we will investigate that option. Does it converge on a compact subset of 0 to pi. What does that mean, compact subset of 0 to pi? Which can be written as, okay, what are the compact subset of this? Is simply delta 1 comma pi minus delta 2 closed interval, and delta 1 delta 2 could be small quantities. So with this, if we apply our result to it, so all the values in this interval, of course, because delta 1 is the smallest number here, so yours for every x in this, delta 1 and pi minus delta 2, of course I am assuming that delta 1 is the
small value here compared to pi minus delta 2, then mod sine nx is actually less than 1 over sine delta by 2, delta 1 by 2. So this is bounded, and this is uniformly bounded, of course, because for all value it is bounded, and again then by Dirichlet test it is uniformly bounded, and 1 over root n will go to 0, so sine nx by it is uniformly convergent. Hence in this interval sine nx by under root n and this series sigma uniformly converges. So this option is correct. Now let us say un dash converges uniformly. So what is un dash? Un dash we can compute easily. So this is the series un dash is under root n cosine nx. Right, this series, because under root n is appearing here, even the nth term is going to infinity. How can the series will converge? So this itself is, although cosine nx may remain bounded, but under root n is going to infinity, so it is not even convergent pointwise, so therefore it cannot be uniform. So this is an incorrect option. So this un dash is basically what we are saying is not convergent. Sigma un dash is not convergent. Okay, so that's how we have investigated all the options. So the key result, if we recap it, what is the key result? Key result is that we have to remember this key result here, that sigma sin nx is sin nx by 2, sin n plus 1 by 2x into sin x by 2. So this the factor which is in denominator will stop your uniform convergence, लेकिन पॉइंट वाइज बाउंडेड है, किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट पे भी ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, और डेरिवेटिव तो इसका नहीं कर रहा है. यस, सो un converge uniformly on 0 pi is incorrect, not correct. Un dash converges uniformly on 0 pi, incorrect. Un dash converges pointwise but not uniform, this is correct, because 0 पे तो नहीं करता है 0 के पास, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है ऑन एवरी कॉम्पैक्ट, सो इट इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर्स आर सी. Okay, the correct answers are C and D. Okay, this and this is correct. Thank you so much.